In today's lecture, some of content like structure of C++ program and we can say the concept of object and class or object as variables of class data types. There are three main topics we have to discuss in today's lecture. In structure of C++ program, there will be certain type of things like C++ streams that will be used for input and output. In that particular topic, we will also discuss about C in and C out objects, and as well as we have also discussed about insertion and extraction operators. These are left shift and right shift operators. And after that, in structure of C++ program, we will discuss about variable definition at the point of use or reference variables. Then we will be discuss about some kind of things like scope and scope resolution operators that will be used for certain things like we can use for variables, we can use for functions also that will be defined in classes or etc. And then we will be discuss about class and objects. Okay, so we will be start with streams because of in C++ program structure some things we have already discussed like header files, IO stream, and using namespace, main function, and or we can say cout, cin, and some kind of variables we have already discussed in previous lectures. है ना, variables, identifiers, इन सब के बारे में हम already discuss कर चुके हैं. So some things are new in structure of C++ programming. These are streams, and we can say your reference variables, then scope resolutions. These things are new. So we will start with stream. Streams, if we talk about streams, streams are those things used for particularly inputs and outputs. It will be anything like it will be a file, it will be a hard drive, it will be a monitor, it will be a DVD, it will be a CD. All things are treated as streams. Okay. In theoretically, you can read this. That is only just a interface that provided to input and output for your program. Just is an interface. Okay. Next one is the statement said. You can read carefully. Stream is a local drive. है ना, stream जैसा कि मैंने आपको बताया stream कुछ भी हो सकता है. That will be input device. Keyboard is also the part of stream. Monitor is also the part of stream. That will be output stream, and keyboard is the input stream. ठीक है. तो if a local drive is works as a stream, then what is the responsibility of that local drive? Produce or consumes information, है ना, वो स्टोर करेगा और प्रोवाइड कर पाएगा. Okay. A stream is linked to the physical device by the input output stream. That will be the important statement. Because of stream जो है वो आपके डायरेक्टली कनेक्टेड होगी जो भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होंगी उनसे. Here keyboard is not a stream, but the interface for the keyboard is an interface. So keyboard is work like an interface.
It will treat it as a stream in C++. ठीक है, कीबोर्ड के लिए एक स्पेशल स्ट्रीम होगी जो उससे डेटा लेने का काम करेगी. That will be we can say manage the flow of data that is input by keyboard. When you press any value from the keyboard, the stream is responsible for that inputted value will be flow in right direction and store at particular memory location that occupied by the particular variable. That responsibility is all of streams. ठीक है, कीबोर्ड से आप डेटा जो प्रेस करते हो वहां से मेमोरी तक ले जाने का काम स्ट्रीम का होता है. ठीक है, तो स्ट्रीम इज जस्ट एक वन इंटरफेस. ओके, तो these some things uh, we can include like source, like destination. Source means the data where the data is generated, and destination means where the data is consumed, where the data is stored. Okay, so these are the streams. There will be some kind of definition of source stream that provide data. Okay, or destination we can say that output from the program. So program से बाहर की तरफ data जाता है. That will be the destination. That will be storage, or that will be output device. There will be several predefined streams like input stream, output kind of some streams are already defined. Most popular stream objects here we can see C in, C out. These are both streams used for standard input and standard output. For C in, the default device is keyboard, and C out, the default device is screen. Other than C in and C out, there are two also popular streams. Both are, we can say, C error or C log. Okay, these are also two streams, and the default device also used for both, that will be screen. ये भी स्क्रीन पे ही डिस्प्ले करती है, जो भी डिस्प्ले करती है. तो दैट इज द डेस्टिनेशन, और वी कैन से डिफॉल्ट डिवाइस, है ना. तो जो भी प्रोग्राम के अंदर एरर्स आते हैं, हमने सी के अंदर जो प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट किए थे, व्हेन एवर वी फाइंड द एनी एरर, देन कंपाइलर डिस्प्ले द एरर ऑन द कंसोल स्क्रीन, और वी कैन से पर्टिकुलर विंडो, है ना. So some kind of buffer things also available here, like some at some times there will be a issue of memory to store some kind of things. Then there will be also some kind of buffer things available. One of the important buffer will be the error, buffered version of C error. C error, one of the stream that displays the error. At some time we can say there will be a program of 1,000 lines, or there will be thousands of errors are available. Then these all errors uh, will be uploaded on a particular screen. It is not a, we can say, possible. All thousands errors are not displayed at same time at the screen. So remaining errors are in buffer. That will be the C log. It is a quiz for you.
Answer the first. Select all the correct statements from the list given below. These are the statements you have to read and give your opinion which options are right. Okay, let me explain. First one, uh, the stream is a flow of data measured in bytes in a sequence. It is the right statement. I already said to you that it will be control the flow of data. It will be from keyboard to program, or it will be from program to uh, display units, we can say monitor. So first statement is right. Data flow को ये manage करता है. Then second, the stream is an intermediator between input output devices and the user. That is not correct. Not between input output devices and user. It interface between input output devices and processing unit, or we can say your program. आपके प्रोग्राम और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में ये इंटरफेस करता है ना. अब हमारे और कीबोर्ड के बीच में कौन से इंटरफेस की रिक्वायरमेंट है आप बताओ. देन व्हाई यू चूज द ऑप्शन बी. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मींस सिंपली वी कैन से कीबोर्ड और हमारे बीच में जो इंटरफेस है उसकी बात कर रहे हैं. There will be no streams. We have to press the just keys of keyboards according to required values. That inputted value, how will be perform a flow to the program? That will be the responsibility of stream. So option B is not right. It is false. Incorrect statement. Then next one is the source stream is to produce data on the screen, and destination stream is to obtain input data. It will be the right. Why the right? Because of here talk about the source stream, that will be we can say source to produce data on the screen, है ना. तो सोर्स स्ट्रीम जो है वो यहाँ पे डेटा को स्क्रीन पे भेज रही है. इट मीन सोर्स स्ट्रीम आपकी कौन सी हुई, सी आउट. सी आउट इज द सोर्स स्ट्रीम. That will be take data from program and put on the screen. And destination stream is to obtain input data. Destination stream, it means we can say the if we gives the data from the keyboard, then that will be data taken by the stream C in, and it will be provided according to requirement of programming. That will be the our proper destination. किसी वेरिएबल में वैल्यू हमें इनपुट करनी है तो उसका जो स्टोरेज स्पेस है वहां वैल्यू पहुंचना हमारा क्या है, डेस्टिनेशन होता है. That will be also right. A stream can basically be represented as a source or destination of characters of infinite length. It will be also right. देखो ये स्टेटमेंट हमने डिस्कस नहीं किया था, तो मे बी दैट इज नॉट योर नॉलेज, बट स्ट्रीम कैन मैनेज इनफाइनाइट लेंथ ऑफ डेटा, है ना. लिमिटेशन होती है वेरिएबल की, कि वेरिएबल इंटीजर टाइप का है, देन दैट स्टोर limited data, we can say 2 byte or 4 byte, that will be allowed by the compiler. जितने allowed compiler allow करेगा, there will be 2 byte or there will be 4 byte, the fixed criteria. But the stream can manage a infinite length of characters.
ना, तो इसको भी आप ध्यान में रखना. So there will be A, C and D options are correct. सर यहाँ पे इंडेफिनिट लेंथ का क्या मतलब है? इनडेफिनेट लेंथ का मतलब है कि ये जरूरी नहीं है कि जितनी आपने वेरिएबल, जिस वेरिएबल में आप इनपुट ले रहे हो उसकी लेंथ है, उतने ही नंबर ऑफ कैरेक्टर को ये हैंडल कर पाए. ये जरूरी नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग तो हम सब के लिए यूज कर रहे हैं. हम इंटीजर के लिए भी सी इन यूज करेंगे, फ्लोट के लिए भी सी इन यूज करेंगे, कैरेक्टर के लिए भी, एरे के लिए, सब के लिए हम सी इन यूज कर रहे हैं. देन वी कांट रेसिस्ट इट. हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि केवल आपको 2 बाइट डेटा पे ही काम करना है. बिकॉज आप फ्लोट लोगे तो उसकी साइज अलग होगी, लेंथ अलग होगी. इंटीजर लोगे तो उसकी लेंथ अलग होगी, है ना. यस सर. और ना तो सर ये कब जो ए वाला इसका क्या मतलब है? ए वाला ना, यस सर. ए वाला तो देखो मेनली मैं आपको इसको विद डेमोन्स्ट्रेशन समझाऊंगा. पर्टिकुलर देखो क्या होता है ना, एक स्टेप्स की सीक्वेंस होती है. कीबोर्ड से जब हम डेटा प्रेस करते हैं तो वो डायरेक्टली मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं हो जाता है. उसको मैनेज करने के लिए एक पर्टिकुलर ऑपरेशंस की सीक्वेंस काम करती है. उस सीक्वेंस को ही हम स्ट्रीम कहते हैं. और वो डेटा फ्लो को मैनेज करते हैं कि एक्चुअली डेटा कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, है ना. आई विल बी परफॉर्म ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑन वेरी सेकंड नेक्स्ट स्लाइड. तो हम वहाँ पे इसके बात करेंगे, है ना. देयर विल बी देन लाइव डेमो, है ना. तो इसके अंदर हम पर्टिकुलरली देखेंगे किस प्रकार से वो सीक्वेंस को मैनेज करते हैं. So there will be some general things like C++ streams are responsible for input and output operations, and there will be a sequential media like screen, keyboard, and files are also included. Okay, these are main, we can say main part of streams. And there will be some kind of operations like insert and abstract characters. Insert का मतलब आप जानते हो, वैल्यू को रखना. एक्सट्रैक्ट का मतलब वैल्यू को कहीं से फेच करना, है ना. दीज आर टू थिंग्स you have to understand exactly both, because of there is a big confusion. These are work not as their meaning, they are work some kind differently. So you have to learn about first what is the meaning. Insert means put the value somewhere, and abstract मतलब fetch the value from somewhere, है ना. Both words are, I think, clear to all of you. Yes. Yes or no, please. I wait for your response. Insert और abstract का मीनिंग सबको समझ में आया? यस सर. Okay. Okay, then we have to proceed. Then there will be two objects we have. Both are C in and C out. We already talk about them. So we talk about them in different way now with response of insert and abstract. So if we talk about then the already we have discussed about C out and C. C out के साथ आप ये वाला ऑपरेटर यूज करते हो, एंड C इन के साथ आप. सर ये सेकंड पॉइंट में कैरेक्टर्स क्यों लिखा हुआ है? वैल्यू तो मतलब डिटेल्स तो कुछ भी हो सकती है. कैरेक्टर में सब कुछ आता है बेटा, है ना. कैरेक्टर में सब कुछ इंक्लूड किया जाता है. एवरीथिंग इज कैरेक्टर. डिजिट्स आर आल्सो कैरेक्टर. ओके. और हमेशा लेंथ जो है वो हम एक्चुअली कैरेक्टर्स में ही प्रिडिक्ट करते हैं, मेजर करते हैं.
Okay, these are two objects, see out and seen, and these are the two operators used respectively with both objects. So, first one is the we can say abstract that will be used with see in. अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि ये मीनिंग से थोड़ा सा रिवर्स वर्क कर रहे हैं और ये आपका यूज होने वाला है सी आउट के साथ। देखो पहले मैं बात करता हूँ सी आउट की, है ना। सी आउट के साथ आप कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हो? इंसर्शन ऑपरेटर। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को हम इंसर्शन ऑपरेटर बोलेंगे जब हम सी आउट के साथ यूज कर रहे होंगे। ओके, इंसर्शन ऑपरेटर, क्या सी आउट इंसर्ट करता है कुछ? ये एक्सट्रैक्ट करता है? एक्सट्रैक्ट। सी वैल्यू आउट, देता है। भाई सी आउट का मतलब तो ये है ना कि ये हमें आउटपुट प्रोवाइड करवाता है यस ना। सर। यस सर। तो दैट विल बी व्हाई वी यूज इंसर्ट, बिकॉज ऑफ जो आपका जो स्ट्रीम होगी जिसको हम आउटपुट स्ट्रीम बोलते हैं, तो आउटपुट स्ट्रीम क्या करेगी? आपकी सी आउट जो ऑब्जेक्ट होगा उस पे डेटा रखेगी। दैट विल बी इंसर्ट। जैसे मान लो मैं बात करता हूं, ये एक प्रोग्राम है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है इसको। यहां पे हमने एक सी आउट वर्ड यूज कर रखा है, ठीक है, सी आउट, और ये है हमारी आउटपुट स्क्रीन। बीच में काम कर रही है आपकी स्ट्रीम, दैट विल बी द स्ट्रीम। देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सी आउट विल बी पुट द इंफॉर्मेशन ऑन द आउटपुट स्ट्रीम। तो इसने क्या किया? डेटा इंसर्ट किया ना स्ट्रीम पे। स्ट्रीम पे डेटा क्या किया? इंसर्ट किया है इसने, और वो स्ट्रीम यहां से डेटा आपका स्क्रीन तक लेकर जाएगी। That's why we use the insertion operator with the cout. यहां हम देख रहे हैं प्रोग्राम से आउटपुट स्क्रीन की तरफ डेटा का फ्लो रहेगा। सी आउट ऑपरेटर आपका जो भी डेटा आउटपुट के लिए आप यूज करना चाह रहे हो वो आउटपुट स्क्रीन पे रख देगा। इट इज जस्ट लाइक ए बस, है ना। ये एक जस्ट बस की तरह काम कर रहा है। सी आउट ऑपरेटर का काम क्या है? सी आउट ऑब्जेक्ट का यहां से जो डेटा आउटपुट करना उस डेटा को इस बस के ऊपर रखना, ठीक है। जो भी डेटा होगा वो इस बस के ऊपर लोड कर दिया जाएगा। ये बस उस डेटा को स्क्रीन तक ले जाएगी। तो ये उस आउटपुट स्ट्रीम नाम की जो बस है उसके अंदर डेटा इंसर्ट करने का काम करता है। दैट्स व्हाई वी यूज इंसर्ट ऑपरेटर विद सी आउट। क्लियर है ये सबको? यस और नो प्लीज। सर लास्ट में डाटा होगा तो एक्स्ट्रा टी ना उस पे डिस्प्ले पे। नो 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 नो, आप केवल और केवल यहाँ पे आउटपुट और स्ट्रीम की बात कर रहे हैं। स्क्रीन की कोई, स्क्रीन से हमें कोई मतलब नहीं है ना। वन ऑफ स्ट्रीम एंड वन ऑफ आवर ऑब्जेक्ट, दोनों के बीच में ऑपरेशन क्या हुआ? सी आउट ने डेटा रखा स्ट्रीम पे, तो सी आउट ने इंसर्ट का काम किया ना। ओनली यू हैव टू फोकस टू सर थिंग्स। फिर तो माउस और कीबोर्ड में कई सारी स्टेप्स होती है, उनमें कई इंसर्शन होती है, कई एक्सट्रैक्शन होती है, तो उनमें से अपन कौन सी चूज करेंगे? डोंट मिक्स ऑल थिंग्स। हम जब सी इन पे आएंगे तब कीबोर्ड की बात करेंगे। अभी हमें सोचना ही नहीं है कीबोर्ड के बारे में। देयर विल बी, यू हैव टू थिंक ओनली वन थिंग, दैट विल बी सी आउट एंड ओ स्ट्रीम, दैट विल बी आउटपुट स्ट्रीम। केवल हमें दो ही चीजों की बात करनी है यहाँ पे। प्रोग्राम के अंदर आपने यूज किया है सी आउट, और ये स्क्रीन है, दोनों के बीच में काम कर रहा है आउटपुट स्ट्रीम,
जिसको हम ओ स्ट्रीम बोलते हैं। तो यहाँ पे हम ओ स्ट्रीम और सी आउट दो की बात करेंगे। सी आउट को जो डेटा स्क्रीन तक भेजना है उसको सी आउट उस स्ट्रीम पे लोड करेगा जिसका नाम है आउटपुट स्ट्रीम। सर आपने ये जो बस का एग्जांपल दिया है, तो इस बस में डाटा रखने के लिए इस बस ने कहाँ से तो एक्सट्रैक्शन करा होगा ना? नहीं, एक्सट्रैक्शन कहाँ से किया है? हम जब बात करें कि कहाँ से तो वैल्यू आएगी? सुनो सुनो सुनो, हम अगर इस स्ट्रीम की बात करें, जो स्ट्रीम डेटा को ले जा रही है स्क्रीन तक, उसने डेटा को एक्सट्रैक्ट किया है, बट सी आउट ने डेटा को इंसर्ट किया है। दोनों को समझो आप। यहां एक देने वाला है, एक लेने वाला है। सी आउट डेटा दे रहा है और ओ स्ट्रीम डेटा ले रहा है। दोनों को सेपरेटली अंडरस्टैंड करो, है ना? ओके सर। तो प्रोग्राम एक वो कंटेनर है जहां पे मान लो बहुत सारा गुड्स पड़ा है और हमें उस गुड्स को किसी शॉप तक पहुंचाना है। देन वी हैव टू यूज सम टाइम ऑफ कन्वेंट, एंड वो कन्वेंस जो है वो आपका ओ स्ट्रीम है। तो आपको तो केवल उस ओ स्ट्रीम के अंदर अपना डेटा भरना है कि अब ले जा भाई। आप अगर एज ए सी आउट ऑब्जेक्ट काम कर रहे हो तो आपको तो ओ स्ट्रीम में डेटा भरना है, आपको तो इंसर्ट करना है। ये इसीलिए कंफ्यूजन है इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन का, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये उल्टा काम कर रहा है ना, इसलिए हमें समझना जरूरी है इसको। ओके, देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सी इन, और मैं यहां भी एक सिनेरियो बना लेता हूं। इट विल बी द प्रोग्राम and it will be the keyboard, और we can say input device और keyboard, जो भी आप रखना चाहो। और इन दोनों के बीच में जो बस काम कर रही है, जो स्ट्रीम काम कर रही है, एक्चुअली उसका नाम है इनपुट स्ट्रीम, और उसको शॉर्ट में हम आई स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, और यहां हमारा काम कर रहा है सी इन। अब कीबोर्ड से जो भी वैल्यू इंसर्ट की गई, अब यहाँ कीवर्ड जो है वो एक्चुअली इंसर्ट कर रहा है, बट कीवर्ड से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें ऑब्जेक्ट सी इन से मतलब है। ये बस डेटा लेकर आ रही है और ये सी इन के द्वारा क्या किया जा रहा है, यहां से डेटा को फैच किया जा रहा है। दैट्स व्हाई द ऑपरेटर नोन एज एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ठीक है, प्रोग्राम को जो डेटा चाहिए वो कहां से आ रहा है, कीबोर्ड से आ रहा है। ठीक है, हो सकता है वो मेमोरी से भी है, नॉट नेसेसरी दैट द कीबोर्ड। समटाइम्स फॉर प्रोग्राम द योर मेमोरी इज आल्सो वर्क्स एज इनपुट। अगर आपने कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है तो वैल्यू कहां से आएगी, मेमोरी से आएगी। तो मेमोरी भी अगर है, मान लो ये कीबोर्ड भी हो सकता है और ये मेमोरी भी हो सकती है। बोथ आर पुट डेटा ऑन आई स्ट्रीम, और आई स्ट्रीम वो डेटा प्रोग्राम तक ले जाएगी, और सी इन वहां से डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा। अब सी इन चाहे तो वो डेटा प्रोग्राम को दे सकता है, और सी इन चाहे तो वो डेटा मेमोरी के अंदर सेंड कर सकता है, स्टोर कर सकता है, अपडेट कर सकता है ना। बट प्रोग्राम तक डेटा पहुंचाने का काम आई स्ट्रीम का होता है, और आई स्ट्रीम से डेटा हमेशा सी इन ऑब्जेक्ट रिसीव करता है। Okay, so these are two insertion and extraction operators. Then I will move on live demonstration. That's why we have some better understanding about extraction and insertion. So these are some kind of
we can say general information about stream flow, or we can say stream. Stream is just a interface that manage our data flow. Sometimes flow from input device to program, and sometimes flow from program to output devices. These are the flow managed by the stream flow. And there are some sources like file input output device or hard disk or CD DVD. These are all sources. Keyboard and monitor is also sources of these particular streams. Okay. इनपुट स्ट्रीम के लिए सोर्स कौन रहेगा? कीबोर्ड रहेगा. आउटपुट स्ट्रीम के लिए मेनली डेस्टिनेशन कौन रहेगा? आपका मॉनिटर रहेगा, है ना. दीज आर द सोर्सेज. देन द streams are of two types: text stream or binary stream. Text stream is just the sequence of characters and end with the new line character. We can say /n. And a binary stream is just a sequence of bytes. So there is no difference between text or binary stream. We can say there will be in text we can say ABC, and in binary byte-wise representation, like the ASCII code of A is 65, and there in binary stream 65 represented in binary form. कैरेक्टर भी 8 बिट स्पेस लेगा और आपका एक बाइनरी स्ट्रीम के अंदर बाइट भी 8 बिट स्पेस लेगा, है ना. सो वी डोंट नीड टू कंफ्यूज इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स. वी हैव टू demonstrate these things. First of all, we start with keyboard. है ना. Keyboard is a standard input device and it is used for input, है ना. From keyboard, the data will be produced. And whenever we produce data from keyboard, that will be handled by I stream. कीबोर्ड से जो भी डेटा निकलेगा, जो भी डेटा फ्लो होगा, वो कौन हैंडल करेगा? आई स्ट्रीम हैंडल करेगी. और आई स्ट्रीम में उस डेटा का रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली कैसा होगा? बाइनरी फॉर्मेट में होगा. दैट विल बी like this. Okay. Then सी इन ऑपरेटर, सी इन ऑब्जेक्ट जो होगा वो डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा. ठीक है. आपके आई स्ट्रीम से, है ना. ये आपके आई स्ट्रीम है. यहां से डेटा को एक्सट्रैक्ट कौन करेगा? सी इन करेगा. ओके. और सी इन यहां से एक्सट्रैक्ट करके जो भी उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल होगा उसके अंदर स्टोर कर देगा, जो भी प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर किया हुआ होगा. देन इट विल बी इन द प्रोग्राम. प्रोग्राम ने आउट इनपुट जो है वो मेनली रिसीव कर लिया है. ठीक है. एंड देन वी हैव टू परफॉर्म आउटपुट स्ट्रीम आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. सो देयर विल बी आउटपुट सी आउट, एंड सी आउट क्या करेगा? इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करेगा और ये ओ स्ट्रीम के ऊपर डेटा को रखेगा. दैट विल बी द ओ स्ट्रीम. ओ स्ट्रीम पे इसने डेटा को रख दिया. अब ओ स्ट्रीम यहां से डेटा को कहां ले जाएगा? आपके आउटपुट डिवाइस पे ले जाएगा. दैट विल बी द मॉनिटर. ठीक है. इट इज द पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, और वी कैन से सी आउट और सी इन. Now we will talk about reference variables. There will be, okay, we have time now. Reference variables. So if we talk about reference variables, then we can say there are variables
we simply use some kind of variables like integer, float, and characters. These are the simple variables. Okay. But the reference variables are just the variables, we can say these are known as objects. Object means it reference something not directly used. जैसे कि आपने स्ट्रक्चर यूज किया था सी लैंग्वेज के अंदर, अगर मैं आपसे बात करूं आपने स्ट्रक्चर यूज किया था वन ऑफ स्ट्रक्चर लाइक नेम ऑफ ए एंड आपने स्ट्रक्चर के अंदर कुछ डेटा टाइप्स को यहाँ पे डिफाइन किया सम ऑफ वेरिएबल्स लाइक एक्स लाइक वाई एंड आपने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया. दीज आर वेरिएबल्स. बट इफ यू डिक्लेयर a variable of name a like ob, ob is not a simple variable, it is a reference variable. Why the reference variable? Because of x or y is only used by the permission of ob. जब तक OB की परमिशन नहीं होगी तब तक आप x और y को यूज नहीं कर सकते. तो ये जस्ट x और y वेरिएबल के लिए रेफरेंस का काम कर रहा है. OB एक्चुअली कुछ स्टोर नहीं करता. OB खुद कुछ स्टोर नहीं करता है. दैट विल बी वर्क फ्रॉम फॉर x एंड y ओनली. ob.x लिखेंगे तो x के अंदर वैल्यू स्टोर होगी, ob.y लिखेंगे तो y के अंदर वैल्यू स्टोर होगी. दैट इज ओनली रेफरेंस. ठीक है, समझ में आया रेफरेंस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट? Please say something, yes or no. Be active and be interactive, not Yes, sir. Yes, sir. passive. Yes, energetic रहा करो थोड़ा. So first I think we should perform demonstration, so we will get some better understanding, and that then we will come later on some kind of examples. So the variables we need to go on demonstration. Understanding reference variables, that will be the one of demonstration of reference variable. So there will be some steps like initially in this live demo we are going to learn about reference variables. We all know there will be some variables like int num2, and there will be assignment operator from num1 to num2, and in num2 there will be the constant value initialization 20, and the value of a and b num1 and num2 हमने दो वेरिएबल दोनों की वैल्यू जो है वो इनपुट करवाई. अब यहाँ पे हमें देखना है कि विच इज द सिंपल एंड विच इज द रेफरेंस. Here we declare an int variable num1 और हमने 10 वैल्यूज को असाइन कर दी. ये हम सबको क्लियर है. ठीक है, मेमोरी के अंदर इस प्रकार से एक स्लॉट बन गया जिसका एड्रेस 2485 है और इसका नेम है num1, है ना, और वैल्यू है 10. नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट वन इज द वेरिएबल नेम num2 and we have a slot of named num2, that's address will be 3658. There will be no value initialization. Okay, then next one, the value of a copied in value value of num1 is copied in value num2.
ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू को क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। और वी कैन से, हम ये कह सकते हैं कि हमने एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में इनिशियलाइज कर दी। ठीक है, हियर सम स्टेटमेंट्स आर included. I read for you. Here, declared int variable num2 is initialized with the value of variable num1. That is clear. We can see easily in that statement. And next one is the, here the value 10 is within two variables. That is the important thing. यहाँ वैल्यू कॉपी हो गई है जो कि num1 के अंदर पे पड़ी और num2 के अंदर पड़ी। ठीक है, so we can say both contain same value, but we can't say two variables have same memory. दोनों में अलग अलग वैल्यू है, वैल्यू सेम है, बट फिर भी मेमोरी दोनों ने अलग अलग ऑक्यूपाई कर रखी है ना, दोनों अपनी अपनी मेमोरी में वर्क कर रहे हैं। देन हमने क्या किया, num2 को री इनिशियलाइज किया, री असाइन किया, और देयर विल बी वैल्यू 20, सो द वैल्यू इज रिप्लेस्ड, वैल्यू हमारी क्या होगी, रिप्लेस होगी बाय द 20। देन द आउटपुट विल बी 10 and we can say 20. These are simple variables, num1 and num2. अब हम बात करते हैं रेफरेंस वेरिएबल्स की। So there will be two variables, int num equal to 10, and यहाँ पे हमने देखो एड्रेस साइन यूज कर दिया num2 के साथ। There will be %. ठीक है, now according to this, first is same as simple variable, there is no change, so num1 is also a simple variable here, and the value 10 is stored as usual. And next one is the variable name with %. Here वेरिएबल num2 is a reference variable. देखो रेफरेंस का मतलब डायरेक्टली आप समझ सकते हो जहां एड्रेस के साथ वर्क किया जाता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया स्ट्रिक्ट का, दैट विल बी आल्सो वर्क विद एड्रेसेस। अगर आप कोई पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हो, दैट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसेस। अगर आप वेरिएबल %% के साथ डिक्लेयर कर रहे हो, देन दैट विल बी आल्सो included in address calculations. These all kind of variables are included in reference variables. ठीक है, तो यहां पे ये क्या करेगा, अब जो सेकंड वेरिएबल है वो एक्चुअली इस टाइप से इसके साथ ऐड हो जाएगा। अब इसने अलग से मेमोरी स्पेस नहीं लिया है। देखो यहां क्या लिखा है, %num2 इक्वल टू num1, तो num1 को इसी के अंदर स्टोर कर दिया गया। दोनों का एड्रेस जो है वो एक्चुअली सेम रहेगा। यू कैन एक्सेस दैट वैल्यू 10 बाय यूजिंग num1 एंड num2 बोथ। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से होगा, ध्यान रखना। सो द आउटपुट विल बी 10 and 10 दोनों वेरिएबल के अंदर, बिकॉज ऑफ these both variables share same memory location. You can differentiate both. Okay, now we will move on PPT. So there will be some kind of things we have to use, like %, here, that will be the %, or we can see
वेरिएबल नेम विच इज प्रीवियसली डिफाइंड, है ना, उसके साथ कर सकते हैं। जैसे हमने num1 को डिफाइन किया num2 के लिए एड्रेस एज ए रेफरेंस वेरिएबल, num2 को डिफाइन किया, है ना। और वी कैन से दैट विल बी द सिंटैक्स। ओके, यही चीजें हमने यूज की थी। पहला हमने डेटा टाइप यूज किया, फिर m% के साथ वेरिएबल हमने यहाँ इंट लिखा था, हमने यहाँ पे m% num2 लिखा था, और यहाँ पे हमने सिंपल वाले वेरिएबल को उसके अंदर कॉपी किया था। ठीक है, तो दैट इज द सिंटैक्स वी ऑलरेडी seen in demonstration. Here will be an example that we already discussed in demonstration, and these are the same things. Here will be a variable of type int, that is simple variable total, and here one of variable of type int sum, that will be of reference type of variable, and we will copy the total in sum. So you can print total or you can print sum, both gives you same result, that will be 100। चाहे आप टोटल को प्रिंट कर लो चाहे सम को प्रिंट कर लो, बिकॉज ऑफ बोथ वेरिएबल शेयर सेम मेमोरी स्पेस। सो दीज आर द रेफरेंस वेरिएबल्स। We already seen the demonstration. Understanding the scope resolution operator, that is a special kind of operation, or we can say I already discussed about this, but we will discuss it once again. It is symbolized using 2 times colon. Okay, that, that, that and that, है ना? 2 बार हम कोलोन्स को यूज करते हैं स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू नेम वी कैन अंडरस्टैंड it is deal with scope kind of things. It provides scope for we can say variables, or for objects, or we can say this type of instances. So if we talk about its syntax and definitions, so the scope resolution operator is a operator that provides scope to other variables or other methods to use local or global or hidden type of things। ठीक है, जैसे कि हमने जब क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था क्लास इज ए एनकैप्सुलेटेड यूनिट। क्लास के अंदर आप जो भी चीजें लिखोगे दीज आर ऑल एनकैप्सुलेटेड, वी कांट एक्सेस आउटसाइड ऑफ द क्लास, है ना, विदाउट परमिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बट द स्कोप resolution operator is the one of the way you can access them outside the class. So whenever we discuss about the function inside the class and function outside the class, we have to discuss about scope resolution operator. Here we simply get knowledge about scope resolution operator, that the this operator works for the resolve some kind of things related to scope, scope of variable, scope of functions, or scope of other things। स्कोप्स के बारे में आप लोगों ने सी लैंग्वेज के अंदर स्टोरेज क्लासेस के अंदर भी पढ़ा होगा, लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप, दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव ऑलरेडी लर्न इन सी लैंग्वेज, है ना। तो उस स्कोप को मैनेज करने के लिए हम यहाँ पे कुछ थिंग्स जो है वो यूज करेंगे, जैसे लोकल वेरिएबल्स है, ग्लोबल वेरिएबल्स है ना, दिस काइंड ऑफ सम थिंग्स वी हैव टू implement using scope resource। I will give the demonstration of it also, or we can say I also give you before going in demonstration one of example
of the scope resolution. There will be an example demonstrating the use of scope resolution operator. There will be a variable of integer type named a, store the value of 10, and the main function, and there will be one of another variable of same name and assign the value of 20. So in memory, both are different variables. a जिसकी वैल्यू 10 है वो अलग है, और a जिसकी वैल्यू 20 है वो अलग है. Both are different variables, not the same. Even the name is same. Cout, local variable value we have to print. We have only written simply a. अगर आप a यूज करोगे तो इस करली ब्रेस के अंदर जो वेरिएबल a है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा. You can also access that variable also, because of it is globally accessible. You can access in any of function, but local is preferable, है ना. तो just simply we can say अगर किसी चीज की हमें जरूरत हो, अगर घर के अंदर अवेलेबल हो, then we have to try use first that thing, then we try to use from outside things, है ना. पहले हम वैसी उसी चीज को यूज करेंगे जो हमारे पास लोकल है. एंड नेक्स्ट वन, अगर आपको इस वाले a की वैल्यू को एक्सेस करना है, देन यू हैव टू यूज स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर विद वेरिएबल नेम. आउटपुट ऑफ बोथ वेरिएबल्स आर 10 एंड 20 अगर हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो. ओके. एंड वन मोर थिंग्स वी हैव टू understand about scope resolution. All these things we already discussed. ठीक है. देखो यहाँ पे ये है कि आप ग्लोबली वेरिएबल्स जो है उनको स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर के साथ एक्सेस कर सकते हो, है ना. डिफाइन आउटसाइड ए क्लास, एक्सेस क्लासेस स्टैटिक वेरिएबल्स, एंड केस ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस. इन सभी में आपको स्कोप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली. देयर विल बी एग्जांपल, आई थिंक इट विल बी द सेम एग्जांपल that will be performed there. Okay, then we will start that. Here some statements are extra, these are extra, है ना. यहाँ पे हमने एक और a नाम का वेरिएबल लिया है, एक और ब्लॉक हमने बनाया here to here, और इसमें एक a वेरिएबल और लिया है, और हमने यहाँ पे भी इसको डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की. So first a variable, that will be the global variable. Okay, so the value stored in memory. Next one is the local variable. It is also take memory separately in main function. Okay, and then one of the मैसेज जो आपने दिया वो एज इट इज आ जाएगा, और वेरिएबल a की वैल्यू कौन सी पुट होगी, यहाँ पे देखो 20 पुट होगी. यू कैन रीडेमोन्स्ट्रेट. देखो यहाँ से ये यहाँ से आया, और ये a आपका यहाँ से आया. ठीक है, यहाँ वाला ये मैसेज आपका सेम आया, ये स्कोप के साथ a आया, दैट विल बी 10 ग्लोबल वेरिएबल, है ना. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब यहाँ पे एक और है, देखो तो यहाँ पे एक ब्लॉक और क्रिएट होगा मेन फंक्शन के अंदर, इनर ब्लॉक, और उसके अंदर एक a नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा, दैट विल बी असाइन्ड विद द वैल्यू ऑफ 30. अब अगर आप सिंपली a को प्रिंट करोगे तो 30 प्रिंट होगा.
ठीक है। एंड अब अगर स्कोप के साथ प्रिंट करेंगे तो 20 होगा या 10 होगा, दैट विल बी द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो I will try. What is the value? That will be the 10. Global most value will be accessed using scope resolution operator. Okay. End of the program. Okay. So today's session is I think finished here.